So hello again, my friends, my 10th student. Now I have brought the another part. There is the last part of the chapter, that is magnetic effect of electric current, and the last part in which we'll cover the rest of the topics. But before watching this part, kindly do watch the part B and part A before that, so that the link of the chapter will be continued. So let's have a look what the topics we are going to cover in this. That is force on a current carrying conductor in a magnetic field. Means if the current is flowing in that you can say conductor in the presence of magnetic field, so how does it apply the force and how it is applicable in understanding the Fleming's left hand rule. And you can say this is also used in the function of electric motor that we use in our daily life, right? Then next we have the Faraday's law, and we can say that EMI. What do you mean by EMI? In the generator, we are quite aware what is the generator and how does it work, how does it depends on that. You can say EMI, that we will just have a look for that. AC and DC alternating and direct current, and the last domestic electric circuit we are going to cover in this chapter, in this topic. So let's start now. The first is what we have, that is force on a current carrying conductor. What is that? Like if you can see over there, there is a conductor and the current is flowing with the battery, the cell is attached in it, and you can see the horseshoe magnet is kept so that to give the magnetic field in this. So what is happening as the current is flowing in the conductor, which is kept in the magnetic field, what will happen? The rod, the conductor, it will just experience a force, and that will help it to displace from its, you can say, position. Why it is you can say displaced? Because of the force. The force is created when the current is carrying, when the you can say current is flowing in the conductor which is kept in the magnetic field. So this is what, and when the displacement will be moved maximum displacement हम कब देख सकते हैं? जब आपका current की direction and magnetic field direction when they are perpendicular to each other, right? This observe displacement बाकी पे भी होगा अगर वो दोनों perpendicular नहीं है, but सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कब होता है? अगर वो दोनों एक दूसरे के आपके परपेंडिकुलर हैं, then there will be the maximum displacement we can observe, right? And obviously if you see in the second picture, you will see that if we just change the direction of current or we change the direction of magnetic field, like north south को अगर interchange कर दोगे, it will happen obviously that the direction of displacement will also be affected, will also be changed. So based on this, you can say हमने तीन चीजों की बात की last topic में. What are the three things? That was the current, magnetic field, and you can say that the force. Now these three of the, you can say, things, the parameters, we can say they can be depending on each other. They, if two are known to us, so we can find out the third parameter's direction. We can find out easily by how? By using your Fleming's left hand rule. And what is that now? As it is in left hand rule, you take your left hand, you have to take the three first fingers and you have to stretch in such a way that these are mutually perpendicular to each other. Can you see my hand? Then all three fingers, they are mutually perpendicular to each other in such a way that you have to stretch your three fingers. What three fingers? The thumb, your forefinger, and your middle finger, central finger, right? So if you do that, so which finger is showing what direction? Whose direction? So thumb, that is showing the direction of motion, means the force, the displacement. The forefinger, that will show the direction of field, magnetic field, and your central finger, the middle finger, that will show the direction of current, right? So in this way, we can just find out how these three are dependent on each other. I have heard somewhere that it is easy to learn. Sometimes it is, we get confused कि कौन सा direction कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है. So just for that, what we can do, easy to learn, that is father, mother, child. The thumb is father, the forefinger is mother, and the third, you can say, that is child. And that you can see that the F stands for force. For you can say thumb, the mother finger is forefinger. You can say that, you can say magnetic field and magnetic field. And third is current, child. Then you can replay, you can just relate with these. It is easy to learn, easy to remember that. So you can use this, so it will be easy to remember and all, right? So let's move further. Okay, the next is what? That is electric motor. Electric motor, when you have seen the electric motor, where we see the electric motor. Electric motor is
very, it is very generally what we have seen, that where we have seen to draw water from, you can say, ground, there you people have seen this, right? Where else you have seen? In the toys, in fan, and there are so many things we have where we people have seen this, you can say, electric motor and all, right? We have seen that. So this is a device in which the electric current is to be given, electric energy is to be given, and that will convert into mechanical energy that help us to move and to do the work, whatever the work we want to have it, right? Like to draw water from ground, or you can say to run the toys, whatever the thing, what means depends कि वो कहाँ पे use हो रहा है आपका. So if you can see the picture right inside, that is given in your inside book as well. So what is this? There's a coil ABCD. The rectangular coil is kept in between the magnetic field NNS, means North Pole, South Pole, is kept here. And can you see in the picture there is a half rings over there? So half ring, that is called the split ring, which is called as commutator as well. आपको कहीं कहीं पे commutator word में मिलेगा. So commutator and split ring, that is the means, it means the same. So this is the one. X and Y, that is not we can say fixed, but they are making the connection between what? Between the battery plus and minus, and between that is, you can say, these split rings, so that current can flow. Then we can say the battery is there to give the current, and there is a key to, for you can say, switch on and off. तो switch off का होता है, ये सब है, पूरा ये operator सब पे लगा होता है. And we can see that मोटर कैसे काम करती है. आपका जैसे आपने करंट फ्लो करोगे, तो what will happen? Because the coil, what is the principle? The principle is what? When a current carrying coil is kept in the presence of magnetic field, it experiences a force. That force which is it experiences, that will help it to move in between the rectangle, you can say, between the magnetic coil and all. So in such a way it will move that by using the Fleming's electron rule, you can see how the direction of coil will change, and because of split ring, the direction of current will be changed. So that why split ring is used, why not the normal? Because क्या करेगा वो, आपका क्या करते हैं वो, ताकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे. अगर आपके हाफ रिंग नहीं यूज होते, अगर आपका कम्यूटेटर यूज नहीं होता, स्प्लिट रिंग यूज नहीं होते, तो व्हाट विल हैपन? आपकी जो वायर है वो ट्विस्ट जाती है, वो पूरा घूमती है, बिकॉज अगर वो पूरा फिक्स्ड होता, एंड दैट may break the wires, and that may damage the circuit, you can say, the you can say motor and all, right? So it may happen. But my advice is that to understand the working of motor and generator के लिए better to watch the 3D videos, so that will giving the more clarity and understand, right? So they are used in electromagnet software and core, and to enhance, we can use it so that it will help to give more fine magnetic strength and all, that will give them more power to the motor. It's heavy and all, the heavy motor use कर लेते हैं, heavy बोलते हैं ना, heavy motor है ये, तो उसके लिए depend करता है. Okay, what is that Faraday's experiment? Faraday's experiment, that is it discovered the magnetic field interacts with the electric circuit, that is inducing a voltage. Now अभी हमने पढ़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर, उल्टा करते हैं. अभी हमने क्या किया, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके, और यू कैन से एक मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट की हुई है, और क्या करेगा, एक कॉइल वहां पे रखा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन, दैट विल हेल्प टू इंड्यूस अ वोल्टेज, दैट विल हेल्प टू इंड्यूस अ करंट in that, and that's what is known as EMI, or you can say electromotive force, and the phenomena is known as electromagnetic induction. Induce कर रहे हैं हम, करंट को इंड्यूस करें, जो जनरेटर में होता है. जनरेटर आप कभी यूज करोगे जब करंट नहीं होता, राइट? लाइट नहीं है, करंट नहीं है, आपका पावर कट है. So what do you do that? The generator will help to give what? The electricity and all. Fine. So if you see that यहाँ पे कोई आपने बैटरी कोई सेल आपने यूज नहीं किया हुआ, यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास एक कॉइल है, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, एंड ये जो गैल्वेनोमीटर आपका है, व्हाट विल हैपन देन, इफ यू आर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप यहाँ पे मैग्नेट है, आपको क्या कराना है, आपको मैग्नेट को मूव कराना है. अभी मैग्नेट को मूव क्यों कराना है, ऐसे ही रख दो तो क्या हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पे फंडा होना चाहिए, देयर शुड बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन. मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो देना है, वो तो ठीक है, वो तो आपको क्रिएट करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो चेंज होना चाहिए, देयर शुड बी अ चेंज. अगर वो चेंज नहीं हुआ, आपने कितना भी हाई मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, आप वो चेंज ही नहीं कर पाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो आपका कोई फायदा नहीं, तो करंट ड्यूस नहीं होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो आपको कॉन्टिन्यूस मूवमेंट कराना पड़ेगा.
आइदर आप कॉइल को मूव कराओ या मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट को मूव कराओ, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होती रहे। वो जैसे जैसे चेंज होगी, we'll see the deflection in galvanometer up and down means left right will be shown. That will be shown that yeah, there is a current inducing. That is a small experiment we can do it, right? So when we place a conductor in a changing magnetic field, changing magnetic field is an important line. That is a changing magnetic field. Changing word is used. ध्यान से देख लो. Some current is induced, and this is what the induced current. The word will be used to induce current, and the phenomena is known as the electromagnetic induction. We may call it, right? So, if a coil is placed near the current carrying conductor, magnetic field changes due to change in current or due to change in, you can say, तो आपको उसको करंट को चेंज कर लो या आप उसके मोशन को चेंज कर लो, जो भी करना है, मतलब आपको से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कराना है, ठीक है। याद देखो दो तरीके थे, एक तो है जो हमने पहला पिक्चर देखा, हमने उसमें क्या था, आपने कॉइल रखा हुआ है, मैग्नेट रखा हुआ है, आप उसमें मोशन करा लो, चाहे कॉइल को मूव करा लो या मैग्नेट को मूव करा लो, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब इंड्यूस हो जाएगा करंट आपका। या फिर एक काम करो, एक कॉइल ले लो जिसमें ऑलरेडी करंट जा रहा है, उसके साथ एक कॉइल रख लो जिसमें कोई करंट नहीं, गैल्वेनोमीटर अटैच है, ठीक है। अभी क्या करो, देखो साथ वाला जो आपका कॉइल है जिसमें आपका करंट जा रहा है, उसमें क्या करना है आपको, करंट आपने दिया, ऑब्वियसली पहले जीरो था, एकदम से करंट आपने चालू किया, what will happen, that will produce a magnetic field line and that will create a deflection galvanometer which is nearby, जो में अटैच है। अब आपने एक बार कर दिया, वो एक बार डिफ्लेक्शन दिखा देगा, फिर वो जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप चेंज नहीं कर रहे। अगर आपको चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूसली उसमें इंड्यूस कराते रहे करंट, तो आप तो चेंज द करंट, करंट को ऊपर नीचे करो, कम ज्यादा करो, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम ज्यादा हो, जिसकी वजह से आपका करंट इंड्यूस कॉन्टिन्यूस होता रहे नियर बाय कॉइल या सेकेंडरी कॉइल में, उसको सेकेंडरी कॉइल बोलो, राइट। तो दिस इज हाउ that you can say how EMI is there, and this the direction, as we have seen the direction of force, your magnetic field and current we have seen by using the Fleming's left hand rule. The same we can use in the Fleming's right hand rule as well, right? This is what right hand rule, यहाँ पे confusion है, यहाँ पे right hand ले लेना, अपना left हाथ लेना, फिर से 3 fingers लेंगे, same चीज है, तीनों को stretch करो in such a way that all 3 are mutually perpendicular to each other. Now the first thumb, it show the movement, कितना मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है मूवमेंट, जो आप मूवमेंट कराते हो। 4 finger again the magnetic field and the C, it is current, but don't use the word current as the induced current. जब आप induced current word use कर दोगे, वो EMI है, वो Fleming's right hand rule है, नहीं तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं है ना, दोनों में क्या फर्क होगा। अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं जहाँ पे एक वर्ड लिखा है करंट, तो आप समझ, जहाँ पे सिर्फ करंट वर्ड यूज आ रहा है वो क्या है, लेफ्ट हैंड रूल है, जहाँ पे इंड्यूस वर्ड आ गया वो आपका क्या है, EMI यानी कि राइट हैंड रूल आपका है, ठीक है। Now generator works on the principle of Fleming's right hand rule, EMI you can say that. So जिसमें हम Fleming's right hand rule use करते हैं to know the direction, it is not a principle is EMI only. So इसमें क्या करते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो यूज करते हैं टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कि क्या है, जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करेक्शन हमें करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, इट इज नॉट इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज generator is a device, okay, the word is written wrong here, the generator is a device used to convert mechanical energy, मतलब मूवमेंट कराओगे वो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें करंट करेगा, करंट में प्रोड्यूस करेगा, जो आपके अप्लायंसेस को मूव कराने के काम आते हैं, ठीक है। सो कॉपर वायर है, मैग्नेटिक पोल्स है। अच्छा यहाँ पे क्या है आपका, इंस्टेड ऑफ आप स्प्लिट रिंग भी यूज कर सकते हो, ये यहाँ पे स्प्लिट यूज होगा, लेकिन आपका अगर आपने स्लिप रिंग उसके साथ पिक्चर में देखी हो तो इट मींस इट इज व्हाट अल्टरनेटिव करंट। अगर आपको एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू व्हाट चेंज स्लिप रिंग विद स्प्लिट रिंग्स। मतलब अगर आपने स्लिप रिंग यूज किया है वो एसी जनरेटर बनेगा, अगर आपने स्प्लिट रिंग यूज करो तो वो आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बी अ डीसी जनरेटर, राइट, दैट विल बी द डीसी जनरेटर, दैट यू कैन जस्ट फाइंड। सो this is how we can say that the picture, again I will just tell you, इसमें Fleming right hand rule यूज होता है, स्लिप रिंग है तो what will happen, because यहाँ पे डायरेक्शन तो यहाँ पे आएगा, जैसे ही वो मूव करता है हाफ रोटेशन एक डायरेक्शन दिखाया करंट की, जैसे वो आधा वाला मोशन करता है वो उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, that's what is AC जनरेटर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो डायरेक्शन सेम रहे करंट की, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, you have to use here split ring instead of slip ring, that to how to convert AC to DC generator, right? So again my advice to go through
your what do you say, कोई 3D मूवी, 3D नॉट मूवी, 3D वीडियो आप उसमें देखना, it will help you to learn it in better way, right? Okay, because that is more of you can say that visual effect ज़्यादा अच्छा होगा to understand the working rather than to theoretical से इतना नहीं आएगा समझ. So डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से आपका क्या है, फ्यूज है. फ्यूज हमें सबको पता है फ्यूज क्या होता है, दैट इज एन एमसीबी, दैट इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड ऑल, जो हमें काम करते हैं, हेल्प करते हैं, उसमें हम डिवाइस में यूज करते हैं. आजकल एमसीबी यूज करते हैं, बट इट इज कन्वीनियंट टू यूज एंड ऑल. थोड़ा एक्सपेंसिव है ठीक है, बट इट इज कन्वीनियंट टू यूज एंड ऑल. Overloading ना हो जाए, so we should avoid using so many sockets in a device and all that. You people know, you have done in grade 7th as well. Short circuit ना हो, खुद पर डिवाइस यूज करने चाहिए. थोड़ा आप हमारा जो भी हमारा जो है व्हाट इज चेकिंग करना चाहिए कि ठीक है कोई वायर अगर पुराना हो गया उसको रिप्लेस करो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग वी शुड डू इट. अदरवाइज नहीं तो अगर हमने एमसीबी यूज किया तो दे विल हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सच डैमेज, बट स्टिल वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके, फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट. सो दिस इज हाउ आवर इन होम में कैसे हमारा घर पे थोड़ा सा होता है. ये हमारा है, हमारे पोल से देखो, हमारे घर में दो तरह की वायरिंग होती है. एक होती है हमारी 2 पिन प्लग, एक होती है 3 पिन प्लग. 2 पिन प्लग कौन सी होती है, जो आप नॉर्मल लगाते हैं, चार्जर पे लगा दिया, जो आपके छोटे डिवाइसेस में लगाते हैं, ठीक है. जो हैवी डिवाइसेस आपके होते हैं, जैसे आपका फ्रिज है, गीजर है, जो भी हैवी डिवाइसेस होते हैं, उसमें हम 3 पिन प्लग लगाते हैं, उसमें अर्थ वायर लगता है. हैवी डिवाइस एक तो करंट ज्यादा करेगा, शॉक लग सकता है, और दूसरी बात ये है कि जो हमारे रीच में होते हैं, मतलब जिससे हमें करंट लग सकता है मेटालिक बॉडी में. तो जो हमारे देखो 2 वायर तो पक्का करंट अगर प्रोड्यूस उसमें फ्लो करवाना है तो उसमें अर्थ वायर का कोई रोल नहीं. उसमें आपको न्यूट्रल और लाइव वायर चाहिए. काम तो गीजर और हीटर तभी भी करेगा अगर आपने 3 पिन लगे, 2 पिन प्लग से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सेफ्टी. सेफ्टी इज अ प्रॉब्लम, सेफ्टी इज नेसेसरी एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द अर्थ वायर एज वेल, राइट. सो लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है. लाइव वायर आपका हाई पोटेंशियल पे होता है, जनरली हमारे 220 वोल्ट होता है. न्यूट्रल मतलब 0 वोल्ट पे है, तो डिफरेंस होगा तभी फ्लो करेगा, राइट. तो ये फ्लो करता है, करंट जा रहा है. एक हमारा अर्थ वायर होता है जो हमारे अर्थ से जाता है, हमारे घरों में जाता है, ग्रीन कलर का नॉर्मल प्रेजेंट होता है, ये हमारे उसमें जाता है, घरों में जाता है, तो हमारे हर रूम्स में कनेक्शन चला जाता है इस तरह से. ये हमारा बोर्ड जो हमारा मेन पोल होता है, हमारे मीटर में जाता है, ठीक है, जिसमें से हमारी रीडिंग जितना आप यूज करोगे उतना ज्यादा बिल आएगा. तो सेफ रहना जरूरी है, सेव करना बहुत जरूरी इलेक्ट्रिसिटी को. सो डोंट यूज इलेक्ट्रिसिटी इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके. सेव करो अर्थ के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए. एंड दैट इज एसी डीसी. एसी ऑल्टरनेटिंग मतलब कि वो करंट के मैग्नेट को उसके डायरेक्शन को चेंज करना पीरियोडिकली, कॉन्टिन्यूसली कर रहा है. जैसे आप ग्राफ में देख लो, ऊपर क्या है, प्लस माइनस, तो वो और ये एक वेव बनती है ना, प्लस माइनस, तो ये एक आपका एसी बन रहा है, ठीक है. ये हैवी जगह पे यूज होता है, पावर स्टेशन वगैरह में यूज होता है. दिस इज मोर सेफर एंड इट इज इजी टू ट्रांसमिट टू लॉन्ग डिस्टेंसेस. डीसी जो है, हमारा करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, चेंज नहीं होती है. जैसे हमारे डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस है जिसमें जो एसी को डीसी में चेंज करते हैं. जैसे हमारा काम करता है, हमारा चार्जर है, क्योंकि हमने प्लग में लगाया. अब जिसमें मेरा फोन लगा हुआ है, वहाँ पे जो चार्जर के अंदर होगा, दैट विल कन्वर्ट व्हाट, एसी टू डीसी, दैट हेल्पिंग टू चार्ज माय फोन, राइट. आपका टीवी है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आप यूज होते हैं जो काम तो एसी पे कर रहे हैं, बट उनके अंदर डिवाइस होते हैं जो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, बिकॉज ये डिवाइस है डीसी पे काम, ओके. सेल्स में, बैटरीज में यूज हो रहे हैं. आप लॉन्ग डिस्टेंस में यूज नहीं कर सकते इनको, डीसी को. सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ही है. और डायरेक्शन तो आपने देखी है, ठीक है. So that was all about the chapter. But before leaving, don't forget to like, view, and subscribe the channel. And please do comment what more changes you want in my videos, and kindly do support. I require your support. Thank you so much. Whoever is supporting, kindly spread it. Ask your friends to like, to subscribe it, and I can just ask you for that. Okay. Before going, that is assignment. Let's kindly go through any problem. You may message me. You may just drop the message there. Definitely going to help you. Thank you so much. Take care and see you soon. Thank you.